Good morning, students. In the previous videos we discussed about what was air pollution, what were the harmful effects of air pollution, and how we can prevent the air pollution. Now in today's video we'll be studying about the water pollution. What is water and what is water pollution? As you know that, as you have listened in the news also, that in the upcoming years the water depletion of water is going to become very less. Means depletion of water is going to occur. Several plants and animals जो हैं they are living in water. It is a basic necessity of life. Consumption of water by humans is increased because in increase in population. As you know, water is a renewable resource and is recycled naturally in the environment. It is also one of the most abundant compound of the earth. About 75% of the earth's surface that is covered with water. By human activities, they are constantly polluting the rivers, seas and other water bodies, which are mainly leads to water pollution. Now water pollution, what you mean by water pollution? Traditionally जो rivers and seas हैं, they have used for disposal of waste. If the amount of water and if you have thrown disposals, ठीक है, of waste in that sea and river, then now that water is a waste in amount. Now if the amount of waste is not very high, natural process of decay, ठीक है, या बैक्टीरिया के थ्रू वो जो वेस्ट है वो क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. बट अगर आप रेगुलरली जो है जो है रिवर और सीज जो है वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, देन देयर इज़, बट इन द प्रेजेंट टाइम द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है इज़ वेरी हाई, विच रिजल्ट्स इन हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया. गंगा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है. गंगा इज़ ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड. The aquatic life was unable to survive. Attempts to clean the river have not had much success. Now water is said to be polluted if it contains impurities that are harmful to humans, animals. Now how you can say that water is polluted? When water contains harmful impurities that are harmful to humans, animals and plants or to the environment. And such substances that pollute water, they are known as water pollutants. Now an ambitious plan to save the river Ganga was the Ganga Plan Action that was launched. What was this Ganga Action Plan? Ganga Action Plan में क्या प्लान बनाया गया कि हमने गंगा रिवर को क्या करना है, उसको वेस्ट दैट इज़ उसको पॉल्यूट होने से बचाना है, ठीक है. अब उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? It has launched and implemented many programs in the past to keep water pollution under control. इन्होंने क्या किया? वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए एक प्लान बनाया, ठीक है. It has launched and implemented, और उसके बेसिस पे एक प्लान था. One such program was the Ganga Action Plan that is named as GAP and which was launched in 1986. Since river Ganga जो है they flow through many temples, towns and industrial cities, human activities like bathing, washing clothes and discharge of industrial waste, they are the main source of pollution of this river. The industries that discharge waste water into Ganga include leather factories and other industries which are situated in Kanpur and West Bengal, ठीक है. Then Ganga Action Plan का क्या एम था? They aimed at interaction and diversion of waste water reaching the Ganga and installation of sewage treatment plant for its treatment, ठीक है. जितना भी आपका वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से आता था, उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो गंगा तक ना पहुँचे, बट उसके लिए एक सेपरेट सीवेज ट्रीटमेंट बनाया जाए ताकि वो कहीं और जाके जो हैं वो डिस्पोज हो. अदर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ like installation of crematoria, riverfront development and provisions of low-cost sanitation facilities. The plan also laid emphasis on public awareness involvement to keep Ganga clean. There were some awareness programs also for the people that they should keep the Ganga clean.
Now, this program has a great extent to reduce pollution, although we still have a long way to go before the river is absolutely free of pollution. Many plants which are grown on the Ganga, like the Yamuna Action Plan, were also launched. ठीक है, some of the newspapers, internet, you can find out the present status of the river Ganga and other river action plans in the progress. So this is your homework, that from internet you have to search that what are the plans which are going on for cleaning river Ganga and other rivers. Now next is causes of water pollution. What are the causes? क्या इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के? मेन है सीवेज, अनट्रीटेड जितना भी वेस्ट वाटर होता है, सीवेज फ्रॉम होम्स, दे आर ऑफन डिस्पोज इनटू रिवर्स. ठीक है, विलेजेस वेयर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, वो सीधे रिवर्स में सेंड करते हैं अपना वेस्ट, विच कॉजेज डिजीज़ बिकॉज व्हेन रेन फॉल्स, रेन वॉशेज ऑफ the human excreta and animal dung into nearby water sources, and such water contains so many disease causing microorganisms. Even it is harmful for the animals which are living in the water. Next is fertilizers and pesticides. अब farmers जो हैं, they generally use some of the chemicals like fertilizers and pesticides to increase their crop production. बट सम केमिकल्स गेट वॉश्ड अवे बाय द रेन. ठीक है, जब भी बारिश होती है तो वो केमिकल्स जो हैं दे आर वॉश्ड अवे इनटू नियर बाय वाटर सोर्सेज, एंड दे आल्सो सीप इनटू द सॉइल एंड विच कंटामिनेट इवन द ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल्स विच आर ऑफन डिस्चार्ज इनटू नियर बाय रिवर्स. लेदर, टेक्सटाइल and other chemical industries, they throw their highly poisonous chemicals of lead, mercury, arsenic into the water sources and such as rivers that cause severe water pollution. And some polluting factories like oil refineries से जितना भी waste आ रहा है वो सारा कहाँ पे जाता है? They are disposed of into the nearby water sources or into the rivers. These were the causes कि कौन इसको कॉज कर रहा है. नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, कि अगर ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ता ही जाएगा तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर. ठीक है, दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज व्हेन रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज, दे मे कॉज नंबर ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड. ऑयल स्पिल्स आर वेरी हार्मफुल टू द एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज में जितना भी वेस्ट निकल रहा है दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू द एनिमल्स विच आर लिविंग इन द वाटर, एंड दे मे ऑल्सो डैमेज द मेराइन हैबिटेट. पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑल्सो लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेस्ट वाटर रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स run off from the agriculture field enrich in organic matter. The entry of nutrient and rich result in a thick growth of algae which may result in the algal bloom. algal bloom आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में से जितना भी आपका वेस्ट निकल रहा है ऑफ द केमिकल्स, when it goes to the nearby water bodies it increases the growth of algae which forms the algal bloom. आपने देखा भी होगा कई बार जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर पूरी एल्गी ग्रो की होती है, दैट इज़ नोन एज एल्गल ब्लूम. सून दीज प्लांट्स कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ वाटर एंड दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. द एल्गी यूज अप so much oxygen that the aquatic animals and other plants die due to lack of it. When water is contaminated with mercury, it is not fit for drinking by animals and human beings. It can cause number of limbs problems. It can lead to blurred vision and mental disorders. Now, how can we prevent water pollution? Bathing and washing clothes near water bodies like lakes, ponds should be avoided. There should be proper sewerage conditions in your homes also for removing your waste water.
डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसमें से रिमूव करके उसके बाद उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना चाहिए. पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली. use of eco-friendly fertilizers and herbicides should be encouraged. So this was about the water pollution, how it is caused, what were the effects, and how we can prevent the water pollution.